अब मैं आने वाली है दीप्ति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुन लिया मैंने। मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। What या a दिस इज beautiful एक्चुअली गुड मॉर्निंग, dance. गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग अलग टाइम है। सिंगापुर में बट थोड़ा सा गुड लेट मॉर्निंग है। मैम। बट दीप्ति तुम्हारे लिए को क्या बोलूं, मतलब द वे यू टेक आउट टाइम टू डू सो मेनी थिंग्स, वाओ। Yeah, कल so जो this आप has been my ऋतु के पास, affirmation that my 24 hours are like 48 hours. ये बहुत टाइम या से, मतलब बहुत सालों से, even before I came into this journey. So there was so much I wanted to do. कभी मतलब मेरा वर्कआउट का टाइम भी बहुत लंबा होता है. So मतलब that I don't compromise. That's my way of life. So I've always affirmed this in my head that my 24 hours are like 48 hours. So in 24 hours I do the things that one does in 48 hours. So नाउ this वी is विल how it ऑल्सो, has been for so long. तो अब हम लोग का ये एफर्मेशन में ऐड करना होगा। नहीं, हाँ, ये affirmation मैं भी रोज अपनी काउंट माई ब्लेसिंग्स में ये रोज लिखती हूँ। आई एम वर्किंग लाइक 48 आवर्स एंड 24 आवर्स। yeah. So it वाओ, becomes like that. So बहुत easy. और मैं कभी ये नहीं बोलती because there's so many people who say पता नहीं मैं बहुत busy हूँ, मुझे किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं मिलता. So it is like that. So and then आई one नो। has to learn to say no. So yesterday, of course, there were two of my friends. They kept telling me that let's go to the lounge and party and let's go out for a drink and this and that. So I just put my foot down. I said no, not today, because I'd spend my day, somewhere like in our other house. So it was like didn't want to go. So yeah, that also we need to pace. It's not that everywhere we appear, or just थोड़ा सा लाइफ को अपनी जिंदगी है, अपने हाथ में स्टेयरिंग व्हील रखनी बहुत जरूरी है. तो कभी कभी नो भी बोलना पड़ता है, इसलिए so that we are easy, so that way. व्हाट इज Sarita द ji, the लाइन, way you व्हाट इज द said लाइन na, दीप्ति? हाँ एक जी. बार वापस sir, बोल देना। व्हाट, सॉरी Oh, सुनैना। that या my 24 hours are just like 48 hours, and in 24 hours I do the work of 48 hours. ओके ओके, टाइम मैनेजमेंट। टाइम या मैनेजमेंट दैट तो आई नो, की टाइम बात है, मैनेजमेंट। वो बहुत जरूरी गुड होता है, मॉर्निंग टाइम मैम। मैनेजमेंट करना. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. मैम, हमारे भी स्कूल में एक टीचर ने बोला था कि जो जो ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा टाइम होता है हाँ हाँ, और वो ऐसा भी एक्सप्लोर होता नहीं है. कर पाते हैं। टाइम हाँ, मैनेजमेंट नहीं होता, वही लोग ऐसा बोलते हैं। एग्जैक्टली. सो गुड टाइम मॉर्निंग मैम। मैनेजमेंट करना. कई लोग जेन्युइनली भी बहुत बिजी होते हैं, बहुत सारा काम होता है, कुछ इनवाइट भी कर हाँ, लेते हैं, काम कुछ होता भी है. इट्स आई नो, लाइक, बट वो निकाल नहीं पाते उसमें से हाँ, टाइम, तो निकाल वही नहीं लोग पाते के टाइम वजह किसी से। चीज के लिए. No, there is always, like in all our life, there's always a tussle about various things, like, so इसलिए prioritization बहुत जरूरी होता है. So prioritize कर लेते हैं कि देखो ये चीज तो जरूरी है ही, ये तो करना ही है, और ये चीज भी जरूरी है, ये दोनों आज का इम्पोर्टेंट चीज है. So that, एग्जैक्टली मैम, या एग्जैक्टली। तो बस prioritize करो और आगे बढ़ते जाओ. ऐसे ही तो दिन है. और फिर लाइफ इज लॉन्ग, एंजॉय इट. जो आज काम करना है, अगर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, बिकॉज यू वांट टू गो टू स्लीप अर्ली, सो उसको थोड़े टाइम बाद हो जाएगा, 2 दिन के बाद हो यस, जाएगा, डजंट मैटर. इट्स नॉट द एंड ऑफ द यस मैम, वर्ल्ड इन एनी केस. यस ओके, मैम। सो तो डे 25, क्यू द मैजिक. जादुई संकेत बोलते हैं इसको हिंदी में. सो अब इसका ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ये है कि जिस चीज के बारे में हमने शायद थैंक यू नहीं बोला है ना, वो हमारी जिंदगी में बहुत आराम से नहीं आती है. जिस, या तो जिसको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है. जैसे अगर हमारी हेल्थ हैज बिन वेरी वेरी गुड ऑल दीज इयर्स, सो हमने कभी भी हेल्थ को इतना ज्यादा थैंक यू बोला ही नहीं है, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स को. सो फिर उस एरिया में जहाँ पे कंप्लेन या फॉर ग्रांटेड हम लेते हैं, वहां पे भी सी दैट वहां पे ब्रेकडाउन आने शुरू हो जाते हैं. फिर उसके बाद यूनिवर्स हमको कोई ऐसी चीजें सामने लेके, सी यूनिवर्स इज ऑलवेज लाइफ वर्ड, लाइक ग्रोथ, प्रोग्रेस, सक्सेस, लव, gratitude, well-being, perfect health, abundance, prosperity. These are called life words. So these life words are part of the universe. Universe like God जो होते हैं, वो कभी भी बुरी चीज तो किसी को देंगे नहीं ना, हमेशा यही सारी चीजें होती हैं. तो हम एज ह्यूमन बीइंग्स हम फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं चीजों को. अगर हमारी हेल्थ अच्छी चल रही होती है, एज अ रिजल्ट अब वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे
like kind of वो चीज हेल्थ अब गड़बड़ होने लग गई है फॉर वट एवर रीजन, सडनली कुछ हो जाता है बिकॉज लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल. सो अब यूनिवर्स विल मेक यू से थैंक यू, सो दैट, मतलब वो कंपैशन होता है गॉड का, फोर्सेस का, यूनिवर्सल फोर्सेस जो भी हम बोलते हैं. सो वो उनका कंपैशन होता है कि वो ऐसी चीज हमारे सामने लेके आएंगे और हमको थैंक यू बुलवाएंगे जबरदस्ती. ठीक है, तो वो मैजिक क्यूज देते हैं. क्यू मतलब संकेत आते रहते हैं हमको. जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें लगेगा कि कोई किसी के नीज में बहुत दर्द है, वो ठीक से नहीं चल पा रहे, तो हमको बोलना होगा थैंक यू फॉर माई परफेक्ट नीज, वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग नीज. ओके. या फिर आपको सपोज आप मनी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो और मनी की कंप्लेन्स है और आपको मनी का ब्रेकडाउन चल रहा है. सो जैसे ही आप एटीएम देखोगे, कोई कैश काउंट कर रहा है, उनको देखोगे, सो थैंक यू फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी इन माय लाइफ. दिस इज हाउ वी हैव टू से. सो आज का पूरा दिन ऐसे हमको संकेत मिलते रहेंगे. जो हमारी आंखों के सामने आ रहा है वो हमारे लिए ही संकेत होता है. लेकिन अब हमको अवेयरनेस में रहना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि खोए हुए हैं तो हम नजरअंदाज कर देंगे उन चीजों को जो हमारे सामने यूनिवर्स लेके आएंगे. तो हमको बहुत सारा पूरे दिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से वो चीजों के लिए जो जो हमारे सामने आती जा रही हैं, उनको हमको, वो मैजिक क्यू है जो यूनिवर्स हमारे सामने लेके आ रहे हैं. आपको एटीएम दिखा तो चुपचाप थैंक यू फॉर ऑल द मनी एंड माई एटीएम कार्ड्स एंड द मनी इन माई बैंक अकाउंट विच इज सो सेफ. इतने सारे लोग लगे हुए होते हैं, बैंकर्स, हमारे पैसे को सेफ्टी के साथ रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या उस चीज के लिए. हमने कभी बैंकर्स को थैंक यू नहीं बोला है ना. इतने इन्वेस्टमेंट हमने म्यूचुअल फंड लिए हुए होंगे, हमने फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है, हमने अलग अलग एसआईपी प्लान्स लिए हुए हैं, हमने कभी उनको थैंक यू नहीं बोला है. तो आज का पूरा दिन जिस एरिया में यूनिवर्स को लगता है कि हमको थैंक यू बोलने की जरूरत है, वो एरिया हमारे सामने आएगा. और ये कभी भी गलत नहीं हो सकता. आपको ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं मैंने गलत संकेत तो नहीं पकड़ लिया है इसका. ऐसा नहीं होता. ठीक है. और एक ही चीज का अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा. मतलब अगर आपको हरी घास नजर आई, ठीक है, और आपको वो ग्रास लैंड बहुत अच्छा लग रहा है, वो पार्क और बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी ग्रास है, ठीक है, तो एक जने का होगा थैंक यू फॉर द मदर अर्थ, फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ अबंडेंस एंड लग्जरी एंड फूड टू ईट. दूसरे का पर्सपेक्टिव होगा थैंक यू दैट आई कैन वॉक सो इजिली ऑन दिस ग्रास. ओके. तो सबका अलग अलग दिमाग में चीज आएगी और वो अपने हिसाब से आएगी, हमारा पर्सपेक्टिव के हिसाब से आएगी. कोई तीसरा बोलेगा थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल गार्डन नियर माई हाउस where I can go in the morning, I can sit on the bench, I can smell the freshness of the air and I can walk with ease. ओके. तो सबका पर्सपेक्टिव है वही घास, द ग्रीन ग्रास, बट सबका देखने का उसका नजरिया अलग अलग होता है ना. सो कोई भी वो गलत नहीं है. मतलब जो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है वो गलत नहीं है. वो हमारे अंदर जो इंट्यूशन या वो जो आ रहा है, वो अंदर का गाइडेंस है, इनर गाइडेंस जो सबकॉन्शियस देगा, उस हिसाब से आप पर्सपेक्टिव देखोगे, क्योंकि हम सबके लेंस अलग अलग है. ठीक है. तो अपने लेंस के हिसाब से हम देखेंगे, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उस हिसाब से हमको नजर आएगा. कोई एम्बुलेंस दिखेगी, थैंक यू फॉर माई परफेक्ट हेल्थ एंड ऑल्सो ब्लेस द पर्सन हु इज देयर इन द एम्बुलेंस. ओके. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है. ये एक गेम है जो आज पूरे दिन हमको खेलना है. ठीक है. सो हम इसको पढ़ते हैं और इसमें इमेज देखते हैं. वो क्लैप की पिक्चर बनी हुई है, जैसे मूवी की वो शॉट शूट करते हैं ना, डायरेक्टर की चेयर है, तो इस डायरेक्टर की चेयर पे आज हम बैठेंगे. ठीक है. इस डायरेक्टर की चेयर पे हम बैठेंगे और क्लैप करेंगे, मतलब वो सीन कैप्चर करना है हमको और उसके लिए खूब सारा ग्रैटिट्यूड करना है. इसीलिए उस चेयर के ऊपर खूब सारा ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर चीज जो हमको दिखेगी उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड करना होगा. सो हाँ जी, अर्चना जी, प्लीज स्टार्ट. Day 25. Cue the magic. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Colau, writer and therapist. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues
to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, or of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says good morning, you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for your happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day to day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you, and so you always attract an exact cues that you need to be grateful for in that moment. Cue the Magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, isn't it a beautiful day? It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are struggling. It's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play cue the magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example,
If you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude. So you can choose to be more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, thank you so much, Archana ji, for reading so beautifully and so slow. You were like a कौन सी वो ट्रेन है ना, बुलेट ट्रेन अर्लियर, उससे आप कितने आराम आराम से पढ़ रहे हो आप. बहुत कोशिश करी है मैंने धीमा करने के लिए. हाँ, नहीं नहीं, बहुत ब्यूटीफुली, मतलब बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ गया है. पहले आपसे होता ही नहीं था ना. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड, या, एंड एट वट एवर एज यू मेड दैट ह्यूज डिफरेंस इन योर रीडिंग. वंडरफुल, मजा आया. थैंक यू. ओके, सो फ्लोरा कोलाओ का ये कोट है, लाइफ इज प्लेफुलनेस. सो हम में से कौन कौन इसको बच्चे की तरह, गेम की तरह जीते हैं कि यस, ये गेम आया, आई हैव टू विन. ओके, इस बार में सेकंड आई, कोई बात नहीं, अगली बार में फर्स्ट आऊंगी. जो हमने वो वाला भी एफर्मेशन सीखा था परसों, है ना, नेविल कोडार्ट का, दैट आई एम सक्सेसफुल इन ऑल द एरियाज ऑफ माई लाइफ and I'm born to shine and lead. Okay, so all those affirmations, they are like, ये लाइफ गेम ही है एक्चुअली. हम लोग को इतना सीरियसली इसको जीने की जरूरत नहीं होती है एक्चुअली. तो इस तरह से कभी भी कोई चाल चल जाता है, जैसे चेस का गेम होता है, एक कदम आगे, कभी कभी एक कदम पीछे रखना पड़ता है, कभी टेढ़े से चलते हैं, कभी कुछ होता है. But then eventually, yeah, you can win in the end. If we have all the tools, and the way to win is only gratitude and love. जो ये दो वेरी पावरफुल फीलिंग्स होती हैं. सो हमने जब पावर बुक पढ़ी थी तो उसमें हमने 3 कीज पढ़ी थी टू अ सक्सेसफुल लाइफ, टू लिविंग द लाइफ ऑफ ड्रीम्स, और टू गेट दैट पावर, है ना. सो द की ऑफ ग्रैटिट्यूड, द की ऑफ लव, एंड द की ऑफ गेम. तो ये 3 कीज रॉन्डा बर्न ने दूसरी किताब में समझाई थी कि ये 3 अपने साथ रखो तो आपको कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, एंड यू विल बी एबल टू विन इन एवरी स्फीयर ऑफ योर लाइफ. ओके, सो दैट्स व्हाट टुडेज दिस थिंग इज ऑल्सो. बस थैंक यू करते जाओ और मौजों में अपना जिंदगी लीड करते जाओ. दिस इज व्हाट इट्स ऑल अबाउट. सो लाइफ इज प्लेफुलनेस एंड वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस, है ना. रीडिस्कवर मतलब मैजिक शुरू से था, लेकिन हम बहुत सीरियस मोड में चले गए थे, ठीक है, तो इससे हमको नहीं नजर आता था. बट अब हम उसको रीडिस्कवर करेंगे, एंड दैट इज व्हाट टुडेज चैप्टर इज ऑल अबाउट. तो रॉन्डा बर्न कहती है मेरी फेवरेट प्रैक्टिस थी. एक्चुअली ये गेम है जो यूनिवर्स के साथ हम खेलते हैं. वैसे तो उन्होंने बोला है कि बस 7 मैजिकल क्यूज ही हमको ढूंढने हैं, लेकिन ये भी लिखा है कि पूरा दिन आप इसको, मतलब ये वाला ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करोगे ना उतना अच्छा है. सो इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लिटिल, योर लाइफ विल चेंज अ लिटिल. इफ यू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड अ लॉट, योर लाइफ विल चेंज अ लॉट. सो वी विल ट्राई एंड डू दिस थ्रू आउट द डे. आज पूरे दिन हम मजे से ये वाला गेम खेलेंगे. जो चीज हमारे सामने आती है वो हमारे लिए ही है, लेकिन हमको पूरे दिन अलर्ट एंड अवेयर रहने की जरूरत है. नहीं तो वो चीज सामने यूनिवर्स लेके आएंगे और हम थैंक यू नहीं बोल पाएंगे. सोचो कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी ना. सो कोई भी चीज आपको जो दिख रहा है, कोई इंसान दिख रहा है, कोई 2 जने आपस में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, दैट मीन्स यू हैव टू से थैंक यू फॉर माई परफेक्ट मॉर्निंग. ठीक है, फिर एकदम से कोई बर्ड आती है, थैंक यू, और वो बर्ड इज टॉकिंग लाइक इट्स चर्पिंग.
सो थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल वॉइस। हमने कभी अपने वॉइस के लिए कभी थैंक यू बोला ही नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए शायद बोला होगा, बट वॉइस के लिए नहीं बोला है। सो इस तरह से थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल वॉइस। ओके, फिर उसके बाद कहीं पे भी बच्चे झूलों पे खेल रहे हैं, अगर आपको दिखते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, दे आर ऑन स्विंग्स एंड दे आर एंजॉइंग ऑन द वो झूला पार्क जो होता है वहां पे, थैंक यू फॉर ऑल द एनर्जी एंड स्टेमिना दैट आई हैव, है ना, क्योंकि आपको बहुत एनर्जी वहां से नजर आ रही है। किसी को फैमिली शुरू करनी है, बच्चा चाहिए, तो फिर थैंक यू फॉर द बेबीज, सो इस तरह से हर चीज आज जो हमारे सामने आएगी वो एक्चुअली हमारे लिए ही है। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड विल ब्रिंग दैट एंड मेक दैट हैपन सो दैट हम उसके लिए थैंक यू बोलें, ताकि जैसे ही थैंक यू बोलेंगे वो चीज जो हमारे दरवाजे पे खड़ी हुई है वो दरवाजा हमारा खुल जाएगा। तो दरवाजा खोलने का तरीका इज थैंक यू। कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड इज व्हाट यू नीड फ्रॉम वेयर यू आर नाउ टू, इट इज द ब्रिज टू वेयर यू आर नाउ टू वेयर यू वांट टू गो। सो अगर आप पॉइंट ए में हो और अगर आप जिंदगी में पॉइंट बी पे पहुंचना चाहते हो, किसी भी एरिया में, बॉडी वेट के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, घने सुंदर लंबे बालों के एरिया में, पैसे के एरिया में, ठीक है, खुशियों के एरिया में, बिजनेस के सक्सेस के एरिया में, जो भी चीज है, तो अब ग्रेटिट्यूड तो करना पड़ेगा अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, नहीं तो उसके बिना नहीं हो सकता। अभी क्या होता है कि अगर हमारी कोई फेवरेट कार सामने आती है तो हमें लगता है मेरे पास कब आएगी कब आएगी, ठीक है, लैक की सिचुएशन में हम चले जाते हैं। फिर उसके बाद कभी भी कुछ ऐसा होता है, अगर आपको कोई बहुत हॉट सी लड़की नजर आती है, परफेक्ट बॉडी वेट, तो आपको लगता है कि मेरा कब बॉडी ऐसी होगी, एक मैं हूं और एक ये है, फिर से लैक की सिचुएशन में चले गए, है ना। तो इस तरह से हमने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें बोली हैं जो मतलब खुशी से नहीं बोली है, मतलब खुशी से नहीं देखते, हमें ये लगता है मेरे पास कब आएगा, मेरे कैसे ऐसे। सपोज कोई दो जने जा रहे हैं, बड़ा लवली सा कपल है और आप अपना पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो देख के लगता है कि कितने वो है, मतलब एक अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसे लगता है कि मेरे पास कब होगा ऐसा, मेरी तो शादी नहीं हो रही, मेरी 34 ईयर्स की एज हो गई, फिर ऐसा लगता है। तो इस कारण ही तो नई शादी हुई थी अभी तक, बिकॉज यही लैक और डेफिशिएंसी का मतलब जो थॉट प्रोसेस अभी तक चल रहा था, मतलब ग्रेटिट्यूड था ही नहीं, सोचा ही नहीं था, ऐसे देख के हमेशा से लैक कि कब होगा कब होगा, अभी तक नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ, इसीलिए वो डिले होता जाता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को तो सही और गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो पता नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड को ये पता होता है कि आपके रिपीटेटिव टॉक्स एंड थॉट्स कैसे हैं, जो आपकी सेल्फ टॉक होती है जिसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं, है ना। सो अपनी सेल्फ टॉक को हम चेंज कर देते हैं, दैट आई एम इजिली लूजिंग माई एक्स्ट्रा बॉडी फैट, आई एम सो इजिली लूजिंग माई एक्स्ट्रा बॉडी फैट। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है ये वाली बात कि आपका फैट स्टबर्न है, आपको वाटर रिटेंशन हो जाती है, कि आपको वो वाली बीमारी है, कि आपको थायराइड है, कि आपको डायबिटीज है, कि आपको ब्लड प्रेशर है, कि आपको ये है वो है। सबकॉन्शियस माइंड को ये सब नहीं मालूम है, उसको ये पता है आपकी सेल्फ टॉक क्या है। अगर उसको मालूम है कि आपको ब्लड प्रेशर है, वो भी आपने रिपीटेटिवली टॉक से करवाया है, बिलीव करवा दिया है सबकॉन्शियस को, मुझे एक्चुअली बीपी है, अरे मुझे बीपी की दवा लेनी है, अच्छा मुझे बीपी है मैं वो नहीं खा सकती, अच्छा मेरा ब्लड प्रेशर इतना है मैं अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेती हूँ, आज मुझे बीपी ऐसा लग रहा है मैं जाके चेक करा देती हूँ। और बोल बोल के 50 लोगों को और बताया है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। हमको किसी को, डॉक्टर के अलावा किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, या आप किसी से गाइडेंस सीख कर रहे हो, बस आप उसको बताओ, उनके अलावा किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, आप अपने मन में भी जो थॉट्स करते हैं वो अच्छे करने चाहिए। तो आज का जो चैप्टर ही वो इसलिए है कि वो सारे हमारे कर्मा को वॉश ऑफ करने के लिए ही है, कि जहां जहां हमने ऐसा सोचा है लैक और डेफिशिएंसी है, ठीक है, वहां वहां पे वो चीजें हमारे सामने आएंगी और हमको बहुत दिल से दुआएं देंगे और थैंक यू बोलेंगे, है ना। पुलिस वालों के लिए कितने लोगों ने उल्टा उल्टा बोला है, मतलब मैंने कभी पॉजिटिव चीज सोची ही नहीं है पुलिस वालों के बारे में, मतलब सुनी नहीं है किसी से। हमेशा लाइक व्हेन आई सी कॉप्स ऑन द रोड और ट्रैफिक पुलिस पीपल, मतलब दे आर सो हेल्पफुल। आई मीन द अदर डे आई वाज जस्ट कमिंग फ्रॉम माय ऑफिस और मेरे घर के सामने 2 5 स्टार होटल्स है, एक हिल्टन एंड एक क्राउन प्लाजा। एंड जब मैं वहां से आ रही थी, उन दोनों होटल्स के सामने, वहां से मुझे राइट टर्न लेना होता है अपने घर में एंटर करने के लिए। मैं वो हमेशा वहां पे, मतलब ऐसे कुछ ट्रैफिक जैम और ये, तो उस दिन तो बहुत ही ज्यादा था, मैं 20 मिनट से खड़ी हुई थी, मतलब एक जगह गाड़ी खड़ी करके, लिटरली मुझे नींद आ रही थी ट्रैफिक सिग्नल पे। सो एंड इट वॉज लेट इन द इवनिंग, लाइक 20 मिनट करते करते तो किसी ने फोन किया होगा मे बी कॉप्स को कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है, द कार्स आर नॉट मूविंग और सब क्रिस क्रॉस वे में खड़ी हुई हैं। सो कॉप्स आए, ट्रैफिक पुलिस, 4 लोग,
and they didn't take literally घड़ी से even 2 minutes to ease and smoothen that traffic. Okay, so I was so grateful that imagine if they had not come. मुझे पहले लग रहा था मैं आगे से थोड़ा जाके यू टर्न लेके वापस आ जाऊंगी ना, I'll take some other way, although I was right in front of my house. Okay, then I thought I'll take a U-turn and come back, but then like उसके लिए भी थोड़ा आगे जाना पड़ता है, because I was number 4 or 5 to the traffic signal crossing, so U-turn भी लेने का मौका नहीं आ रहा था. So such helpful, so I was so much blessing them, so जो जितने भी कॉप्स हैं, हम हमेशा ट्रैफिक पुलिस को बोलते हैं, अरे ये हमसे पैसा लेने के लिए खड़े हो गए, या बहुत ही करप्ट होते हैं, बहुत ब्राइब लेते हैं. तो इस तरह से हमने बहुत उनके अगेंस्ट ऐसे कर्मास फेस किए हैं, जिसके कारण हम कुछ प्रॉब्लम्स में फंसते रहेंगे, बिकॉज ये कर्मा हमने ही किया है ना. सो इट इज टुडेज टाइम इज टू इरेज ऑल ऑफ दैट बाय सैचुरेटिंग दैट एरिया विद ग्रेटिट्यूड. सो आज जितने भी कॉप्स नजर आएंगे या जो भी, वो आपका मैजिकल क्यू है, आप देखना, बिकॉज इसमें ये भी लिखा हुआ है दैट इट्स अ पर्सनल वन. दे आर पर्सनली गिवन टू अस. So they might be given to me, maybe they are not given to you. मेरे सामने कॉप्स आ जाएंगे या मुझे नजर आ जाएंगे, मेरी नजरें मुझको, मतलब they will seek your नजर, like जो भी चीजें आपको आज जो अलग अलग नजर आएंगी, so वो आपको सीख करेंगी, आपकी नजरें वहां मुड़ जाएंगी अपने आप. इसका मतलब वो आपके लिए मैजिक क्यों था. ठीक है, हो सकता है आपकी कॉप्स की तरफ नहीं जाए, हो सकता है आपका बहुत सुंदर, जैसे प्रिया ने मैसेज किया था कि वो बहुत अच्छे जैस्मीन सुबह, like she was taking the fragrance and she said it was such a beautiful fragrance, so she had texted me that. So वो उसमें से मेरे लिए मैजिक क्यों है ना, that thank you for all the, it could be two ways, thank you that I'm getting to spread the fragrance, or it could be thank you for all the beautiful perfumes that I have so many perfumes because I love them. Okay, so for all the beautiful perfumes that I have in my collection from all over the world, different brands and really beautiful ones. So उसमें से मैजिक क्यों निकल गया, इस तरह सबको अपना अपना मैजिक क्यों आज ऐसे ही हमको डिराइव करना है सिचुएशन से, है ना. इसमें लिखा हुआ है बिकॉज यूनिवर्स इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, गॉड इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग. God is a very powerful force and the creator of the world and is also shaping our destiny. God is that, okay? But God is not a human कि वो हमारे पास आ जाए और बोले कि अच्छा तुमको 6 कमरे का बहुत बड़ा बंगलो चाहिए था, तो ये वाला ले लो. ये वैसा ही बंगलो है कि जिसमें टेरेस है और बहुत अच्छा गार्डन है और बहुत अच्छे से like आप enjoy करोगे, खूब सन आता है. So God cannot do that, no? But it will bring someone else's house in front of us, जिसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे, ताकि वैसा कि वैसा घर हमारी जिंदगी में आ जाए. So God will just bring that someone's house or someone's car in front of us so that we can say thank you, and now that door will open for us. Okay, so universe uses the law of attraction to give you signs and cues to help you to receive the dreams. कहते हैं ना यूनिवर्स बहुत दयालु होते हैं. So that is what it will bring, everything, and then it will conjure the people, circumstances and events that surround you in your day, जिसके लिए हमको थैंक यू बोलना होगा. तो इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे अगर आप एम्बुलेंस का सायरन मतलब सुनते हो, तो बी ग्रेटफुल फॉर योर परफेक्ट हेल्थ. इफ यू सी अ पुलिस कार, बी ग्रेटफुल फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. हमको पता है ना, दिवाली, दशहरा, जैसे कल 15th अगस्त है, हम सबको पता है, मतलब आई वॉज ऑल्सो वेटिंग, ओ मेरी छुट्टी है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं दोपहर को सोऊंगी, मुझे एक पीपीटी बनानी है, मैं वो बनाऊंगी, मैं ऐसे काम करूंगी बिकॉज मेरी छुट्टी है. कैन द कॉप्स टेक अ छुट्टी टुमारो? नो. इनफैक्ट अगर उनका वीकली ऑफ भी होता है, वो बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 15 दिन से यू सी सो मेनी कॉप्स ऑन द रोड बिकॉज ऑफ 14th and 15th दोनों का तो सिक्योरिटी इश्यूज को और टाइटन करने के लिए, ताकि हम सेफ रहे. ठीक है, वो काम करते हैं ताकि हम सेफ रहे. सो दे आर सो सर्विंग टू अस. ओके, सो टुडे इज अ डे, आज खूब कॉप्स नजर आएंगे जिस भी शहर में, अगर आप इंडिया में रहते हैं, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे के पहले थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट हो जाती है. सो खूब कॉप्स नजर आएंगे, खूब सारा ब्लेसिंग, उनको मैजिक डस्ट, उनको थैंक यू बोलना कि इतने अच्छे से सेफ्टी. कभी वो दिवाली पे अपनी फैमिलीज के साथ नहीं होते, क्योंकि दिवाली पे सिक्योरिटी बढ़ जाती है. फायरमैन जो होते हैं जितने भी, वो दिवाली वाले दिन सारे फायरमैन आर ऑन देयर टोज, कि कहीं कोई क्रैकर से कुछ ऐसा ना हो जाए. सो दे आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड, ऑलवेज गेयर्ड अप इन देयर आर्मर दैट दे हैव टू रन एनी टाइम. सो इस तरह से वी रियली नीड टू ओ अ लॉट टू देम, वी डू ओ अ लॉट टू देम.
ओके फिर इसमें लिखा हुआ है अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ नजर आ जाए आपको, या आप न्यूज़पेपर भी अगर आपकी आंखों के सामने आए, सो यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर द ग्रेट न्यूज। पता नहीं है ग्रेट न्यूज, बट हम पहले से ही थैंकफुल हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से होता है। अगर आपको अपना बॉडी का वेट चेंज करना है और आप किसी को देखते हो जिनका परफेक्ट बॉडी वेट है, आप अपने वेट के लिए थैंक यू बोलो। अगर आपको रोमांटिक पार्टनर ढूंढना है, तो अगर आप किसी कपल को देखते हो मैडली इन लव, तो आप थैंक यू फॉर माई परफेक्ट पार्टनर, है ना। इस तरह से आज हमको करते रहना है। सो इट सेज दैट जब आप घर पे वापस आते हो, इट्स योर मैजिक यू टू बी ग्रेटफुल फॉर योर होम। ठीक है, और जब नेबर आपको कॉफी पे बुलाते हैं या हाय भी करते हैं, थैंक यू फॉर योर नेबर, यू नो लाइक दैट ऑल्सो। वी नेवर सेड थैंक यू। हमारे पास तो नहीं है लड़ने झगड़ने वाले नेबर्स, मेरे पास तो नहीं है। सारे बहुत स्वीट, हेल्पफुल, हमेशा स्माइल करते हैं। मतलब इवन बिफोर आई ओपन माई माउथ दे से गुड मॉर्निंग, सो बट देन कभी नेबर्स को ऐसे थैंक यू नहीं बोला है ना। सो दैट इज वॉट इट इज। अगर आप कोई मटेरियल चीज अपने आप को जिंदगी में जो आपको चाहिए, शूज आपने किसी के देखे और आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं वो शूज, एंड देन यू रियली यू नो लाइक यू एडमायर देम, सो थैंक यू फॉर माई ऑल द शूज दैट आई हैव, यू नो लाइक दैट। अपने कपड़ों के लिए थैंक यू। कोई कंप्यूटर आपने किसी का देखा, बड़ा अच्छा सा लैपटॉप है कुछ, thank you for my laptop. So this is how we have to, whether you have it or not, you have to still say thank you, तभी वो चीज आएगी। थैंक यू मतलब दरवाजा खोलना उस चीज के लिए। ठीक है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। सो दैट इज व्हाट इट इज। आज का गेम की तरह खेलेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है बहुत सारे अनलिमिटेड एंड क्रिएटिव वेज है जिस तरह से यूनिवर्स आपके पास आज बहुत सारी चीजें लेके आएंगे आपकी आंखों के सामने। ऑल वी नीड टू डू इज टू बी अलर्ट एंड अवेयर। ऐसे नहीं कि सपनों की दुनिया में खोए हुए हो। Be alert and aware so that we can actually say thank you। तो ये आज का दिन अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ दिन है, इसको वेस्ट मत करना। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है अगर आप सोचो कि क्या ये मेरे लिए क्यों है, नहीं ये तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो क्या मेरे लिए क्यों है, नहीं है, तो इट सेज दैट यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट द एग्जैक्ट क्यूज दैट यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट मोमेंट। सो कभी ये मत सोचना कि ये इसमें मेरे लिए क्या है, ये सोच लो कि मैं कैसे क्यू को थैंक यू बोलूं, बट ये नहीं कि ये मेरे लिए क्यों है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। सो यू बिकॉज यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट द एग्जैक्ट क्यूज। ओके, सो रोंडा बर्न बोलती हैं कि ये एक डेली गेम है मेरा, और मैंने इसको प्रैक्टिस कर लिया है, और अब मैं वो सारी चीजें जो यूनिवर्स मुझे क्यू में देखते हैं, मैं पहले से थैंक यू बोल देती हूँ उस चीज के लिए। मुझे पता है कि ये गेम है मेरे सामने। सो यूनिवर्स इज एक्चुअली प्लेइंग विथ यू हाइड एंड सीक ऑल द टाइम। ओके, सो दिस इज इट से रोंडा बर्न कहती है इट नेवर सीजेस टू थ्रिल एंड अमेज मी हाउ द यूनिवर्स फाइंड्स न्यू वेज टू क्यू मी टू सेट द मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इनटू मोशन। तो हमारी लाइफ में यही होगा, जिस चीज के लिए वो सारी चीजें जो हमको दिखेंगी, इट विल सेट। मे बी अभी सेशन में इतने सारे मैजिक क्यूज मिल सकते हैं, यू नो कोई कुछ शेयर करेगा वो मैजिक क्यू होता है, कोई गुड मॉर्निंग बोलेगा तो थैंक यू फॉर द परफेक्ट मॉर्निंग। सो क्यूज तो अभी से ही शुरू हो जाओ ऑब्वियसली, है ना। सो दैट्स इट। और परेशान नहीं होना, जैसे घर में इसमें लिखा हुआ है किसी का एसी खराब हो जाता है, कभी किसी का रेफ्रिजरेटर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसी का आरओ खराब हो जाता है, कभी कभी गैस पाइपलाइन में दिक्कत आ जाती है, कभी बर्नर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी माइक्रोवेव में ब्रेकडाउन आते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, ओ ये खराब हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है, खराब होते जा रहे हैं। अब क्या होगा, हमारा एटीट्यूड ही चेंज है। अब हम बोलेंगे थैंक यू फॉर माई ब्यूटिफुल माइक्रोवेव, थैंक यू फॉर ऑल माई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सो बिकॉज वो परेशानी वाला, हम एक्चुअली प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाते हैं प्रॉब्लम देख के कि गीजर खराब हो गया, गीजर खराब हो गया, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है। अब हम बोलेंगे थैंक यू फॉर माई गीजर दैट गिव्स मी नाइस हॉट वार्म वाटर, यू नो दैट गिव्स मी अ रिफ्रेशिंग शावर। सो दैट इज व्हाट वी विल से। तो हम पहले ही उसको थैंक यू बोल देंगे, तो अभी वो गीजर तो बहुत आराम से यू नो लाइक ठीक हो जाएगा। सो दैट्स व्हाट इट इज। और बस यही है, अलर्ट एंड अवेयर होना होगा हमको। सो दैट्स इट अबाउट, एंड देन इट सेज दैट यू नो द मोर ग्रेटफुल यू एंड द मोर अलर्ट एंड अवेयर यू बिकम, मतलब खूब सारे मैजिक क्यूज अगर हम आज ढूंढेंगे, उतना ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड बोलने का मौका मिलेगा, और जितना ज्यादा थैंक यू बोलेंगे उतना ही इजिली ड्रीम्स हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, हम हाई वाइब्रेशन मोड में होंगे, इस वजह से ड्रीम्स हमारे पास होंगी। So universe, cue the magic. It says bring it on. We are ready for it. That's it. So cue the magic में जो practices हमारी हैं, morning, evening remains the same. Morning we write 10 blessings. फिर हम रीड करके 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। वो हमने कर लिया होगा, नहीं तो हम अभी करेंगे सुबह जरूर से।
और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस वो हमारी कंटिन्यू रहेगी कि हम पत्थर हाथ में पकड़ेंगे इन आवर फिस्ट और सारी चीजों को दिन भर में जो आज सोचेंगे और उसमें से बेस्ट चीज निकालेंगे और वो करके सो जाएंगे। और इसके बीच में जो आज की प्रैक्टिस है इसमें लिखा हुआ है वैसे तो 7 ग्रैटिट्यूड हमको करने हैं, 7 क्यूज ढूंढ के, लेकिन रोंडा बर्न ने बहुत अच्छे से बड़े पैराग्राफ में लिखा है कि ग्रैटिट्यूड आप जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में फर्क आएगा। इसलिए आप पूरा दिन अपना बिता दो आज मैजिक क्यूज को थैंक यू बोलने में। सो वील डू, बट देन आपकी मर्जी, अगर आप 7 ही करना चाहते हो तो 7 काउंट रखना उसका जरूर से, और नहीं तो आप अनलिमिटेड करो आज पूरे दिन और सुबह से अभी से शुरू हो जाओ मैजिक क्यू अपने लिए ढूंढना। ठीक है, सो वो सब हमारे लिए क्यों होता है जो होता है। So that's it about this chapter. Now we go to the other book, which is Power of the Subconscious Mind. Yeah. So small sharing now. you want to share right now? Can we finish this book and then we can? आवाज तेज करो, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। to get ready for my office. So उसको थोड़ा सा लेट बहुत छोटा सा And your voice is breaking. Priya, can you like tell me what is the thing like? It's not audible actually, ma'am. है ना? हाँ, मुझे लग रहा था change. कि because I keep my volume very low. अभी ठीक है ना? मैम पूनम कह रही हाँ। है बहुत छोटी मतलब शेयरिंग खड़े है। हो जाओ एक बार ना, स्टैंडर्ड एक तरफ खड़े हो जाओ। हाँ अच्छा चलो हाँ मत। हो सकता है उसकी वजह से। अभी ठीक है मैम? हाँ हाँ अब ठीक है। हाँ बस मैम छोटा सा मुझे आपके बोलते बोलते में मुझे मेरा क्यों मिला, एक छोटा सा मुझे एक रिक्वेस्ट और एक शेयर करना था। जैसे ही ये चैप्टर था क्यू द मैजिक, तो मैं ना घर से बाहर वॉक करने निकल रही थी। आई फॉलोड मैजिक फुटस्टेप्स। मैं थैंक यू करते करते लिफ्ट तक पहुंची कि आज मुझे मेरा बेस्ट क्यों मिले। द मोमेंट आई केम आउट फ्रॉम माई टावर, मुझे वो लेडी मिली जिससे ऑलवेज आई एडमायर, हु इज वेरी हेल्दी, जो हमेशा रनिंग करती रहती है सोसाइटी में, एकदम से वो दिखी। सो आई थॉट मुझे पहला क्यों मिल चुका है। और फिर मुझे ना मैं कल से सोच रही थी कि आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन इन दिस ग्रुप कि टुमारो इज 15th August, सो वी शुड से थैंक्स और वी शुड राइट 5 ग्रैटिट्यूड फॉर आवर फ्रीडम फाइटर्स और ऑल दी सोल्जर्स आर्मी। तो आई वाज थिंकिंग कि बोलूं कि नहीं बोलूं, चलो और मेरे को टाइम मिलेगा तो बात करूंगी। बट आज अभी देखो आपने सारा कॉप्स के बारे में अपने आप से मतलब आई डोंट नो हाउ यू रीड माई माइंड। तो मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ या बोलना चाहती हूँ आप अपने सेशंस में बोल देते हो। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई अर्लियर एक्सपीरियंस व्हेन आई वांटेड टू टॉक टू यू, और आपने वो सारे ऑलरेडी आंसर कर दिए थे तो मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। तो थैंक यू सो मच मैम। और एक ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर ऑन द ओकेजन ऑफ 15th August we all can write 10 blessings for all the soldiers and freedom fighters. So those who have done a lot for us. And That's because it. of them the freedom we have. हम Yes, इतने ma'am. आराम Yes, से ma'am. घूमते फिरते हैं, अब तो कुछ वैसा है ही नहीं जो हमारे वर्ल्ड वॉर के टाइम जब शुरू हुआ था, जब इंडिया का वॉर हुआ था उस वक्त तो कुछ मतलब it is like when India became independent, so कितने Right. restrictions थे विमेन को, स्पेशली विमेन को बहुत restriction थे उस टाइम, Right, पहनने ma'am. में, काम करने में, वर्क करने में. So definitely, yeah, we will write for all the freedom fighters, for people involved, people who had given up their life to make our country free, for the courage that they had, and because of them all the freedom that we have. We'll definitely write gratitude. Thank you, Poonam. Thank you so much, ma'am. That's it. Thank you. Thank you. Is it lotus panache, Poonam? Yeah. How do you know? Yeah, I can see the background. Even we are going to shift there sometime in Tower 15. That's Yeah, great. देखो, the world is so small. Yeah, again, Yeah. it's a cue for me. Yeah. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah, thank you. God bless you. Thank you. Thank you, ma'am. So we read this book. Reena, are you reading? Yes, ma'am. Yeah, so we are Your- reading about your mind does not grow old. मतलब हम ऐसे सोचते हैं कि हमारा दिमाग उम्र के साथ साथ कम हो जाता है, हमको चीजें याद नहीं रहती. अर्चना जी का mind, if we actually see her mind, so it's only getting better and better. And Reena, I think even yours is getting, I don't know you from before, like from earlier on, but like your memory, your everything you remember, the way you jot down and the attention span you have, it's like amazing.
Okay, Yes, so ma'am. that is Thank the you, ma'am. chapter, and you're Yeah, the right person to read this I also can feel the improvement I have in your after life, है joining ना? this session. Now, Yeah, ma'am. yeah. हाँ जी. So, former President Herbert Hoover, now 88 years old, is very active and is performing monumental work. I interviewed him a few years ago in his suite at the Waldorf Astoria, New York City. I found him healthy, happy, vigorous, and full of life and enthusiasm. He was keeping several secretaries busy handling his correspondence and was himself writing books of a political and historical nature. Like all great men, I found him affable, genial, amiable, loving, and most understanding. His mental acumen and sagacity gave me the thrill of a lifetime. He is deeply religious man and is full of faith in God and in the triumph of the eternal truth of life. He was subjected to a barrage of criticism and condemnation in the years of the Great Depression, but he weathered the storm and did not grow old in hatred, resentment, ill will, and bitterness. On the contrary, he went into the silence of his soul and communing with the divine presence within him. He found the peace which is the power at the heart of God. Yeah, so this is about the American president. If I remember right, he was the 31st president of America. And वो मतलब अर्ली 90s में 90 years में उनकी डेथ हुई थी. तो जब प्रेसिडेंट तो 5 ही साल के लिए रहते हैं, तो वो प्रेसिडेंट 20 से 30s के कुछ बीच थे. आई थिंक 27 28 से लेके लाइक 31, जो वो 5 साल थे, तब ये प्रेसिडेंट थे. और इनका बहुत काम सराहा जाता है क्योंकि उस वक्त अमेरिका बहुत ही फाइनेंशियल टर्बुलेंस में था, और ये नोन थे अपनी स्पिरिचुअल पावर को टैप करके चीजें जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, दैट यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू गेट योर आंसर्स. आस्क योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर अ वे फॉरवर्ड. When you want to choose even a dress, ask your subconscious mind, that subconscious mind, please reveal to me which one should I take, this or this, which size will fit me perfect. So हर चीज के लिए जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने हमको सिखाया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करो, उससे पूछो सवाल, वो आंसर करेगा. वो ये करते थे एंड ही वॉज नोन फॉर इट, और बहुत ही बिंदास पर्सन थे. इन्होंने ग्रेट रेवोल्यूशन अपने टेन्योर में, जब प्रेसिडेंट टेन्योर में थे, उन्होंने किया. और जब वो मतलब इसमें लिखा हुआ है कि 88 इयर्स के थे, तब तो खैर वो प्रेसिडेंट नहीं थे क्योंकि प्रेसिडेंट वो बहुत पहले थे. 64-65 में इनकी डेथ हुई थी. तो वो इतने सालों तक, मतलब 88 इयर्स तक, खैर इनकी डेथ 2-3 साल के बाद और हुई थी, इसमें तो 88 इयर्स का बताया हुआ है. तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी ऑब्वियसली तब अलाइव थे ना, तो उन्होंने बोला था कि वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी जो इस किताब के ऑथर है, वो इनसे मिले थे, प्रेसिडेंट से, हर्बर्ट हूवर से मिलने गए थे, और उन्होंने देखा कि वो बहुत अलग किस्म के इंसान थे. और 88 इयर्स के थे जब उनकी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने देखा दैट ही वाज सो जोवियल, ऑलवेज लाफिंग, बिंदास, फुल ऑफ एनर्जी, वेरी नाइस पर्सन, एंड सो एमिएबल, मतलब इजी टू गेट अलोंग. सो ये सारी चीजें. एंड देन एट 88 years also he was super healthy, happy, vigorous, full of life and enthusiasm, है ना. यहाँ तो हम यंग लोगों को इतना रिजाइंड एटीट्यूड के साथ देखते हैं जैसे जिंदगी खत्म हो गई है. सो this is the spirit of youthfulness, so to speak. So he was a perfect example of being so youthful. इसीलिए इनके बारे में डॉक्टर मर्फी ने लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि इनको अपने टेन्योर में बहुत ज्यादा लोगों का क्रिटिसिज्म, ऑपोजिशन का फेस करना पड़ा. सब ग्रेट डिप्रेशन, जो फाइनेंशियल टर्बुलेंस आया था, उसके लिए इनको ब्लेम कर रहे थे कि देखो प्रेसिडेंट है, इनको सरकार चलानी नहीं आ रही है, इसलिए ऐसा जो भी है. But then he was so graceful, even when people are, like throwing stones at him.
He was so graceful in his conduct because he was very, very sure that what he is doing is right, because वो सारे guidances अपने subconscious mind से लेके वो actions लेते थे. So he did not, इसमें लिखा हुआ है that he weathered the storm and did not grow old in hatred, resentment. Normally परेशानियां आ जाती हैं तो हमको बीमारी हो जाती है ना, मतलब ज्यादा स्ट्रेस आता है तो सारी बीमारियां स्ट्रेस की वजह से ही होती है. सो हम हेल्थ केयर सेक्टर में आजकल डायबिटीज का नाम ही हमने स्ट्रेस डायबिटीज रख दिया है. मतलब बोलते ही है कि स्ट्रेस डायबिटीज है. किसी का कोलेस्ट्रॉल हो जाता है हाई तो हम बोलते हैं स्ट्रेस के कारण कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया. किसी को थायराइड होते तो बोलते हैं स्ट्रेस के कारण थायराइड हो गया है. So it is always mental stress that translates into diseases. So इनके साथ इनको तो मतलब इमेजिन आप प्रेसिडेंट हो वो भी इतने बड़ी कंट्री के. So बहुत मतलब obviously it could have felt so bad to him. Hatred, resentment, ill will, bitterness खूब मिली उनको. But वो बिल्कुल भी he did not let himself get affected by all that. On the contrary, वो अपने silence of the soul में चले गए, यानी कि subconscious mind से guidance लेने लग गए कि मुझे आगे क्या action लेना चाहिए. And that's why we are even studying about him today. We have not studied about any other. Of course, Barack Obama was someone who was again a very, very amazing person. So so he found that peace in his subconscious mind, which is the power of the heart of God. That is what the president also did that time. Hanji. Reena? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We need our senior citizens. मैम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए. क्यों? His mind active Okay, at okay, the 99, above madam. paragraph. Yeah. His mind active at 99. My father learned the French language at 65 years of age and became an authority on it at 70. He made a study of Gaelic when he was over 60 and became an acknowledged and famous teacher of the subject. He assisted my sister in a school of higher learning and continued to do so until he passed away at 99. His mind was as clear at 99 as it was when he was 20. Moreover, his handwriting and his reasoning powers had improved with age. Truly, you are as old as you think and feel. Yeah, this is so true. If you think that I'm 70 and I can't do this and I can't do that means that now is the time to grow old. So never have to. इसमें यही लिखा हुआ है that वो उन्होंने अपने फादर के बारे में लिखा है, डॉक्टर बर्फी ने. उन्होंने बोला 65 इयर्स के जब वो हुए तो उसके बाद उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी नहीं, ठीक है, और वो अथॉरिटी बन गए 70 इयर्स में. फिर उन्होंने इनकी सिस्टर को हायर लर्निंग में पढ़ाया और उन्होंने लिखा कि उनकी हैंडराइटिंग और उनका दिमाग और उनकी क्रिएटिविटी उम्र के साथ साथ बढ़ती रही लगातार, बिकॉज ही वॉज लर्निंग न्यू थिंग्स. सो इवन द रीजनिंग पावर्स, एनालिटिकल एबिलिटीज, that also improve with the age. So इसलिए लिखा हुआ है, so you are as old as you think you are. So इसमें लिखा हुआ जब वो 20 साल के थे वैसा दिमाग उनका 99 में भी था, बल्कि इवन बेटर हो गया दो तीन एरियाज में, लाइक रीजनिंग एबिलिटीज में और हैंड राइटिंग में. दिस इज हाउ इट इज लाइक. तो इसीलिए ये जो बिलीफ है ना कि उम्र के साथ साथ हम थोड़ा भूलने लग जाते हैं या दिमाग तेज नहीं रहता उतना, memories fades away and all that, that's not true. Okay, we make ourselves like that. Hanji. We need our senior citizens. Marcus Porcius Cato, the Roman patriot, learned Greek at 80. Madame Ernestine Schumann Hank, the great German-American contralto, reached the pinnacle of her musical success after she became a grandmother. It is wonderful to behold the accomplishments of the oldsters. General Douglas MacArthur, Harry S. Truman, General White David Eisenhower, and American financier Bernard Baruch are interesting, active, and contributing their talents and wisdom to the world. The Greek philosopher Socrates learned to play musical instruments when he was 80 years old. Michelangelo was painting his greatest canvases at 80. At 80, Caius Simonides won the prize for poetry
John von Goethe finished first, and Leopold von Ranke commenced his History of the World, which he finished at 92. Alfred Tennyson wrote a magnificent poem, Crossing the Bar, at 83. Isaac Newton was hard at work close to 85. At 88, John Wesley was directing, preaching, and guiding Methodism. We have several men of 95 years who come to my lectures and they tell me they are in better health now than they were at 20. Let us place our senior citizens in high places and give them every opportunity to bring forth the flowers of paradise. If you are retired, get interested in the laws of life and the wonders of your subconscious mind. Do something you have always wanted to do. Study new subjects and investigate new ideas. Pray as follows: As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. Yeah, so this is about, I was just thinking that यहाँ पे senior citizens के लिए Dr. Murphy ने लिखा हुआ है that, get interested in the laws of life and the wonders of your subconscious mind. Do something you have always wanted to do. Study new subjects, investigate new ideas, and imagine considering that youth already ये सब कर रहे हैं, ठीक है? But we are still youth. अब according to WHO, World Health Organization, अब आप 65 years तक youth कहलाते हो, ठीक है? वो पैरामीटर चेंज हो गए पहले कि एक सर्टेन एज तक कि आप यूथ होते थे. अब ऑफिशियली टिल द एज ऑफ 65 वन इज कॉल्ड अ यूथ. ओके, सो हम बहुत सारे यूथ हैं हमारे ग्रुप में. ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 95% हम लोग यूथ में ही आते हैं. लेस देन 65 years हैं. बट क्या लेस देन 65 years में भी हम ये सब कर रहे हैं? Understanding the laws of life, wonders of the mind, doing new things, studying new subjects, investigating new ideas, making ourselves useful to the society. Are we doing that? Or we just waking up in the morning, cooking, then, like whatever. So this is what we need to become more useful, because each of us have got, unparalleled creativities and talents, and we have to bring that into fruition. Okay, not just wasting our life doing kitty parties and things like that, right? So pursue your dreams. Like ask subconscious mind that in what direction I should make my career. What else can I do that will be very fruitful for me and the others, and something that I really love. Okay, so all those things we need to ask if we have time available on our hand. Okay, because we can really become very useful to someone or for something, and at the same time we will keep ourselves occupied, we will meet different people, we will learn new ideas, new interests, new hobbies, new different things, like लोगों के साथ ही get along करना, लोग देखना. हमने ये कोविड के टाइम में देखा था ना, one thing that we were missing is the crowd around. तो अब कोई भी बोलता है ना सड़क पे बहुत ट्रैफिक है और बहुत मॉल में बहुत रश था, तो मुझे लगता है oh God, thank God for that, because we have seen empty roads जब एक सोल भी नहीं होता था सड़कों पे, ठीक है? So like coming at a time, it is so good to have people around, interacting with them. It's a different kind of a social growth altogether that we get just by meeting someone or being amidst the crowd. So it's very it's a therapy, isn't it? I mean, people got into depression. Of course, Zoom पे तो बात कर ही रहे थे ना सब लोग. जब कोविड था तो एक आध साल Zoom पे तो सब कनेक्ट हो रहे थे, फेस टाइम कर रहे थे, वीडियो कॉल्स कर रहे थे, वो सब तो हमारा चल ही रहा था. उसके बावजूद लोनली फील कर रहे थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ 40% of the population around the world took divorce, right? So it's such a huge kind of an impact that it had on us. So realizing that it is very important to be amongst the people, that gives a lot of growth in itself, accepting different ideas. Otherwise we become very stubborn about things. जब अकेले रहने की आदत हो जाती है ना, और कोई आपको कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप लोगों में घुल मिल नहीं रहे हो,
So it becomes like, yesterday someone was telling me that I love my space, and I love my space. I don't like to go, and like even if I'm going somewhere, मुझे hotel room अपना ही चाहिए होता है, मैं अकेली रहती हूँ क्योंकि I don't want to waste my energy interacting with people. So I was quiet. I didn't want to unnecessarily give my opinion or my thought about it. But imagine that's the reason for somebody's depression or whatever it is. So it's not just about, of course, like as senior citizens को भी Dr. Joseph Murphy बोल रहे हैं कि go out in the society and make yourself useful, or study new subjects, investigate new ideas, do all the things that you always wanted to do, So that is what it is. So imagine that some of us are not doing that even right now, isn't it? But in our own way, when you really write in your dream list, हमारे पास तो power है ना gratitude की, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमारे पास power है gratitude की. सीखते रहो, पढ़ते रहो, लोगों के लिए यूजफुल होते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुशियों से मिलते रहो, लोगों से मजे करो, अपनी अच्छे से वॉक करो, सारी वो चीजें करो, बिकॉज एक्सरसाइज करने से भी बहुत ज्यादा दिमाग में फर्क पड़ता है, नए न्यूरॉन सेल्स बनते रहते हैं लगातार. So all of that. So this is what we need to do. Never think that I can't do this and I can't do that. For people who have small children, I always say that work from home, pick up something. हमारे पास तो ये power है ना कि हम ड्रीम लिस्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, हमारे लिए वर्क क्रिएट हो जाएगा. लेकिन हमें नहीं पता ना, हाउ में तो हमको जाना नहीं होता, हमारे लिए वर्क क्रिएट हो जाएगा. आप ड्रीम लिस्ट में ऐसी चीज लिख लो कि घर पे रह के 4 hours that I really wish to engage myself. Thank you universe for giving me the job of my like customized according to my this thing, and then you can in whichever way, which is so beautiful. When I went to Singapore and so there of course like we were all together. So I don't know if I should tell her name. So she takes the tourists out and shows them amazing places, like, so just to, if you want to share, you can share if you're there on the call. So I was so amazed that, making yourself useful in such a beautiful way, right? I mean, like taking the tourists out, being an Indian, taking the tourists out and showing them like amazing places out there. It's such a good thing to do. I was really amazed and touched by that particular thing. Okay, so it is so beautiful that आप ये भी कर सकते हो, आपने अपने आप को इतना यूजफुल बनाया हुआ है कि अब हेरिटेज एंड कल्चर किसी कंट्री का एक्सप्लेन करना. And then she went with me also and showed the place around. So I had a fun time, there. So in your own way, for people who are not working can actually, because इतनी creativity है हमारे अंदर, हमने सब उसको दबा के रखी हुई है ना? तो अब टाइम है उसको expound करने का and bring it around. So yeah, I'll just see the time. Okay, the fruits of old age. The fruits of old age. His flesh shall be fresher than a child's. He shall return to the days of his youth. Old age really means the contemplation of the truths of God from the highest standpoint. Realize that you are on an endless journey, a series of important steps in the ceaseless, tireless, endless ocean of life. Then, with the psalmist, you will say, they shall still bring forth fruit in old age. They shall be fat and flourishing. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. You are a son of infinite life, which knows no end, and you are a child of eternity. Yeah, thank you, Reena. We'll be able to read only so much today. Okay, So ma'am. this is like so beautiful. It says that, you have to, हमारा जो soul है, subconscious mind, that's the spirit of love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. And इसके लिए तो कोई law नहीं है ना. This is the law of ourselves. So we have to grow and progress ourselves. I think this is also the last chapter of the book. और कल हम ये wrap up कर लेंगे इस किताब से. और अगर कल हो पाए तो कल ही हम शुरू कर लेंगे. We'll start with the second book. We always read different ones. Okay, magic stays in our life because growth and progress comes because of magic. That actually forms a pattern of gratitude in our subconscious mind. Magic हम कभी बंद नहीं करते हैं, उसके assignments हम कभी बंद नहीं करते हैं. वो बहुत ही क्विक फिक्स है जिंदगी को लीड करने का.
और जो दूसरी किताब है वो हम चेंज करते रहते हैं, हर बार अलग बुक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम कल से शुरू करेंगे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, बिकॉज वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर विजुअलाइजेशन। ओके, सो दैट इज व्हाट वी विल। और वो शक्ति गवैर ने लिखी है वो किताब, और बहुत सुंदर किताब है। उसके बाद आप देखना कि आपकी जिंदगी में कितने मॉन्यूमेंटल डिफरेंसेस एंड चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे फॉर गुड। So yeah, that's about it. So we'll end here. Anyone wants to add, share? We have only 5 minutes to do that because today I don't have so much time. I mean, I need time for my workout. Anyone wants to share, add, or else we get going? Thank you, Okay. ma'am. So chalo then, we'll meet tomorrow. Thank you, Deepti. Thank you, Thank Deepti. you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, ma'am. Beautiful, Thank you, beautiful everyone. day. It's almost like a Archana, weekend Reena. today. Midweek Yes. weekend. Archana ji, Reena, all ko sabko thank you. Yeah, thank you. Thank you, Bye ma'am. bye. Thank you so Thank much, you, Deepti, Bye-bye. ma'am. A Sarita ji. fun-filled day full of joy and laughter. Yes. Thank you, Thank everyone. you. Thank you. Thank